Viewers, if the condition in the national capital is concerning, that in Punjab is alarming. From villages to cities, Punjab reels under flood fury with thousands displaced and lives lost. Punjab is battling with the worst of the monsoon mayhem at this point. Floods have wreaked havoc across the state, leaving behind a trail of destruction. The death toll has climbed to 37, with over 3.5 lakh people impacted and 1,650 villages inundated. Massive rescue operations are underway with 30 plus teams of the NDRF, BSF, Army, Navy, IAF, all working together on the ground. Even as the teams, in fact, battle floodwaters on the ground, Punjab stares at weeks of hardship ahead. For thousands of families, the fight now is not just survival, but piecing life back together after the monsoon mayhem. We bring to you ground reports and, in fact, voices of these people who are stuck and severely impacted. Listen in. Punjab has been witnessing incessant rains. The latest is Punjab being declared as hit by disaster. But yes, what we can tell you is this is Mohali's phase 11. And look at this, knee-deep waters right here. Look at this car portion be floating away. And this is where a lot of water has gushed in. Clearly a crisis for residents in low-lying areas. All 23 districts are deeply impacted, but when we're looking at these particular waters, remember, decongestion is being done. These are tough times for residents here in phase 11, but clearly this is also talks about whether the administration was looking into all these aspects, and there are machines being put here to ensure that the water level subsides, but adding on is the continuous rains, which is making things extremely worse. But clearly, as far as several lanes are like this are concerned, remember, tough times for residents, and remember 23 districts of Punjab at this point of time facing the wrath of fury of waters. With camera person गिरीश, दिस कमलजीत संधू इन मोहाली फॉर इंडिया टुडे। आप ये बताइए अंदर कितना पानी आया? पानी 1-1 फुट खड़ा हुआ है कमरों के अंदर जो है। आज इतना बुरा हाल है कि इस बार भी लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत है मैडम यहाँ पे ना, यहाँ पे पानी ये कम से कम समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी इस पे काम चल रहा था, लेकिन वो काम इन्होंने प्रॉपर टाइम पे पूरा नहीं किया। इसके रिगार्डिंग ये प्रशासन की नाकामी है। पंजाब सक्षम है अपने आप ਸਾਂਭੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਭਰਾ ਜੁਟ ਗਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि ऐसी जिथे जिथे नुकसान हो रहा है भरपाई करिए। अलग अलग किट्स है, 3 अलग अलग किट्स है जो ड्रोन्स है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन वाला जो सर्वेलेंस करते हैं। सर्वेलेंस करने के बाद ये जो इनका एक और सिस्टम है जहाँ पे इनका पीए किट्स, पीए सिस्टम्स इन्होंने सेट किए हैं। तो हम अनाउंस कर सकते हैं घर से घर बाहर आ जाओ। जब घर से बाहर आ जाएंगे हम आइडेंटिफाई करके वहाँ से हम राशन पहुँचा देते हैं।